Amazing! That was truly magical. Today we are going to dive in something fascinating, the Bhagavad Gita. I bet someone of you have heard about it. But did you know Bhagavad Gita has many powerful life lessons? Oh, absolutely. And not only life lessons, but the Gita is also packed with interesting facts. Let's start with this one. Did you know the Bhagavad Gita was spoken over 5,000 years ago on a battlefield? Wow! Imagine that wisdom given on a battlefield. That's where Lord Krishna shared these thoughts with Arjun when he was full of doubts. And here's something very interesting. The Gita was the first scripture ever translated into English back in 1785 by a British man, Charles Wilkins. That's how it began reaching readers all around the world. Wow, Ashvi! People from all over the world find Gita inspiring. And even Gandhiji said the Gita gave him inner strength through tough times. That's really powerful. Did you know the Gita isn't just about spirituality? It also teaches us to live with purpose or dharma. It reminds us to focus on our actions without being attached to the results. Now it's our honor to invite someone who embodies true leadership, inspiring us all with her vision and dedication. She is someone who not only leads with her wisdom and strength but also listens to others' perspectives. Her encouragement and support motivate us to achieve our best every day. With great respect, I invite our esteemed principal ma'am, Dr. Himani Tyagi, to come forward to address and welcome the gathering. Respected Chief Guest, Shri Brajesh Singh Ji, esteemed guest of honor, Mr. Abhishek Kumar Ji, Chairman, Mr. Naveen Goyal Sir, Vice Chairperson, Ms. Seema Goyal Ma'am, dear parents, grandparents, and colleagues. A very warm welcome to this celebration of India's rich traditional wisdom. We've put a lot of thought and heart into today's event, and I'm genuinely grateful that you all made the time to be here with us. Now, why did we choose to celebrate this theme? In a world where artificial intelligence and technology are reshaping our daily lives, it's so important to stay connected to the timeless values that have guided humanity for generations. Parents and grandparents, we all lead such busy lives. Parents are caught up with their work. Grandparents are also caught up in TV and devices. Schools are busy in completing and rushing through the syllabus. In this mad rush, somewhere I feel we have lost on imparting our children the traditional values. I remember way back in 2012, I was in the United States and I chanced upon an online course on Bhagavad Gita. Out of curiosity, I joined that course. To my surprise, I found that that course on Bhagavad Gita was taught by two Westerners, two Englishmen,
who had in-depth knowledge and understanding of Bhagavad Gita. They taught us the lessons on management, lessons on leadership, lessons on how should we lead our day-to-day lives. And I was so inspired and impressed. I wasn't aware that Gita is so relevant to today's times. A Westerner had to tell me that. हम में से कितने लोग हैं जिनको एक दो गीता के श्लोक के अलावा गीता की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गीता एक बहुत सॉट आफ्टर कोर्स है. गीता का कोर्स पढ़ने के लिए आपको बहुत हाई क्रेडिट्स चाहिए. यूनिवर्सिटी ऑफ सीटन न्यू जर्सी, वहाँ भगवत गीता पढ़ाई जाती है. मैं ये प्रश्न सारे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, जो भी हमारे माननीय गेस्ट्स आज हैं हमारे साथ, सबसे पूछना चाहूंगी कि हमने कितना एम्फेसिस दिया है अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज पे. हमने कितना कोशिश की है समझने की कि हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है और वो हमारे आज के जीवन में कैसे एप्लीकेबल है. दिस इज द रीजन why we chose this theme. Let's revisit, let's reteach our traditional values. It's very important that our children find their roots. अगर जड़ नहीं होगी तो कोई भी पेड़ पनपेगा नहीं. It's very important to give your children their roots. As an educator, somebody who has been in education for good 16 years now, मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे एक बोझ से दबे हुए हैं, स्ट्रेस में हैं. These are competitive times. Lots of expectations of parents. बच्चों का बचपन कहीं खो गया है. Parents' dreams, parents' expectations have to be fulfilled. This is my observation. What can we learn from Gita? If Krishna was here, what would he tell us today? So this is what this program today is all about. Another important agenda and something that is close to my heart today, we also have the founder of Lung Care Foundation with us. Let's take a moment to reflect on an urgent issue affecting us all, especially here in Delhi NCR. Pollution. This is just not a problem today, it has become a crisis. As winters approach, we will be enveloped in a smog full of particulate matter, causing asthma, lung cancer. But we are still very casual about it. This is the right time to think about it. Like I said, this is an issue very close to my heart as I lost my mother due to lung cancer, who was a non-smoker, of course, led a very clean life. This should ring alarm bells in our ears. And as we get ready for festivities of Diwali, we have to reflect how will we celebrate this festival. Using firecrackers, spreading noise all around. There are a few choices that we have to make and we must all ponder upon that. I look forward to what Abhishek ji has to tell us and how we can contribute towards this mighty mission that Lung Care Foundation has taken up. इन सब के बाद मैं ब्रिजेश सिंह जी आपको थोड़ा सा अपने स्कूल के बारे में बताना चाहूँगी. We are a big family today. We started our journey somewhere in 2020. Before that, we were online for a couple of years. So for all practical purposes, our journey began in 2020. And today, we have a huge loving family. We have 1,200 families in our ambit. A huge round of applause. This couldn't have been possible without the love and support of our parents, dedication of the staff, and the vision of our management. Brijesh, can I request you to put up my slides, please?
Okay. So dear parents, with your support, now we are CBSE affiliated till grade 12, and that sure deserves a huge round of applause. That was a mighty milestone that was achieved this year. So many congratulations to the entire family. Move forward. Now, I won't take much time because I know we are all very eagerly waiting for the performances. Just a very few selected milestones and achievements I would like to share with you all. We have been very recently in this October awarded by Education World as #1 school in Greater Noida West. We ranked #4 in the entire Greater Noida. Again, that's a mighty feat. Thank you. Move forward. This is me and our Vice Chairperson, ma'am, receiving the award in Gurgaon in the month of October. Now, something that is worthwhile is, how did we rank so high? Because we scored majorly on the competence of our faculty. So dear parents, rest assured, your children are in the hands of very, very competent teachers. And they do not give you this award on platter. There is a significant survey that happens, and only after rigorously being evaluated, we were ranked so high. So congratulations to all the teachers of the Millennium School. We have a lot of emphasis on the reading abilities, and in the reading proficiency, we have been ranked amongst the top 10 schools in India. Please keep the applause coming. These are some of the reading skills for the benefit of the parents. We have just listed down in a table. So you can see that we have scored very high, and because of that we have landed amongst the top 10 schools of India as far as reading is concerned. Move forward. Again, this is a creative writing competition called Trust for Sustainable Living. 64 countries participated in this competition, 340 schools and 1,594 submissions. Among them all, our students really shone bright. Move forward. Swasti Agarwal, International Ranking 10, and all the 3 other students, Priyanshi, Kavya and Ranveer, received a special mention. Many congratulations to both the students and their parents. This is one program called Educational Initiatives, that is National Benchmarking Event, and in that, our children nationally are amongst top 5%, 9 students, 18 students amongst top 10% nationally, and 46 children amongst top 15% nationally. Huge feat again, a huge round of applause for all the parents. These are the children. Move forward. Congratulations to all of these children. Congratulations once again. This is the first time that we participated in CBSE clusters, and these are our 2 children who have really shown brightly. Move forward. Devansh Patel. He's won gold in lap race and also won gold in ring 300-meter time trial at CBSE National Championship in Bangalore. A huge round of applause for Devansh Patel and his parents. Shriyansh Mishra won 1 silver in road 1 lap race. These were some of the selected achievements. Of course, there are many more, but due to paucity of time and also honoring the event at hand, I will just conclude my speech here. More milestones to achieve as a family, and please enjoy the event. Very good afternoon.
मम्मी करी मैं हूँ अनंत। आज आपको जीवन के सत्य की कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए आपको ले चलता हूँ आज के समाज की ओर, उन समस्याओं की ओर जिनका निवारण द्वापर युग की भांति आज भी गीता सार में छिपा है। जब मैं आज इस पीढ़ी और माता पिता को देखता हूँ तो मुझे अनेक चुनौतियां दिखाई देती हैं। आज के समय में विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के दबाव में घिरे हुए हैं, जैसे हर कार्य में सर्वश्रेष्ठ होने का दबाव, माता पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने का दबाव, बढ़ती हुई प्रतियोगिताओं का दबाव व आत्मविश्वास को बनाए रखने का दबाव। मैं देख रहा हूं कि कभी कभी विद्यार्थी के आंतरिक गुणों का आकलन न करके उनके बाहरी स्वरूप को अधिक महत्व दिया जाता है, जो युवा मन को झकझोर के रख देता है और उनकी अपनी पहचानी यंत्र मनुष्य के लिए बहुत बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। जहां एक को बच्चे मैदान में खेलने की अपेक्षा यंत्रों के रूप में यंत्रों के साथ खेलने में व्यस्त है, इस असंतुलन का परिणाम उनके मन और शरीर दोनों पर दिखने लगा है। और माता पिता, मैं आपको भी देख रहा हूँ कि आप बच्चों के माध्यम से अपने अपूर्ण स्वप्न को संपूर्ण करना चाहते हैं। क्या सफलता केवल अंकों और उपलब्धियों से नापी जानी चाहिए? तो चलिए आज हम चलते हैं मिलेनियम विद्यालय की ओर और देखते हैं कि द्वापर युग की भांति कृष्ण और अर्जुन समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं। A very good afternoon once again. We are honored to welcome Shri Tejpal Nagar, Honorable MLA from Dadri. So your presence inspires us and we thank you for your dedication to our community. It is a privilege to have you with us today. Welcome once again, sir. Over to the show.
हे कुंती पुत्र, क्या हुआ? तुम्हारे मुखमंडल पर ये आश्चर्य के भाव क्यों प्रकट हो रहे हैं? हे मधुसूदन, ये हम कहाँ आ गए? यह कौन सा युग है? हे पार्थ, यह कलयुग है, कलयुग। हे माधव, हम इस युग में क्यों आ गए? और क्या आप इस युग में भी उसी भांति विचरण कर रहे हैं जिस प्रकार आप द्वापर युग में थे? हाँ, इस युग में भी भगवत गीता की शिक्षा जीवित है। हे केशव, इस युग में तो बड़ा परिवर्तन ज्ञात हो रहा है। इस युग की वेशभूषा, वाणी व जीवन बड़ा भिन्न दिखाई दे रहा है। इस युग में हमारा क्या काम? पार्थ, यहाँ भले कुरुक्षेत्र का धर्म युद्ध नहीं है, किंतु यहाँ अनेक युद्ध हैं। अभिभावक, शिक्षक व छात्र छात्राओं के अंतर्गत कई ऐसी बातें हैं जो युद्ध की भांति आपस में चलती हैं। हे केशव, इस विषय पर प्रकाश डालिए। पार्थ, आज के अत्याधुनिकता के कारण जीवन के कई क्षेत्रों में असंतुलन व दुविधा हो रही है। कभी विद्यार्थी अपने पद से भटकता है, तो कभी अभिभावक और शिक्षक उन पर अपना दबाव बनाते हैं। इन सबसे व्यवहार में भी अशिष्टता उत्पन्न हो जाती है। अर्जुन, प्रभु, इस समस्या से कैसे निपटना होगा? कृपया विस्तार से बताइए। पार्थ, चलो पहले इस युग व युग की समस्याओं की कुछ झांकियां देखते हैं। जो आज्ञा प्रभु। The students are in the party and Aryan are sitting on a bench and are glued to their phones, playing a game together while Jia and Rahul discuss outdoor activities. Rahul, after study, I love chasing games. Rat-a-tat, it's so refreshing. Same here, outdoor games keep me energetic. What about you, Priya? I just play games on my phone. Who need outdoor games when you have this? But Priya, you are always on your phone. Don't you study or play outside? I can always study later. This is more fun. Yay! We are almost at the next level of our game. You both are missing out. Come, join us for a game later. It's way more fun. Jia's mother and aunt enters. These kids nowadays are always glued to their phone. No matter how much we tell them, they just won't listen. I know it is so hard to get them to go outside and play. I am worried about their health. Suddenly, Aaron winces in pain and clutches his eyes. Ah, my eyes! It really hurts. Aaron, what happened? Are you okay? Aaron looks scared and confused.
confused, struggling to open his eyes properly. Aryan, what happened to your eyes? See, this is what happens when you spend too much time on your phones. We told you so many times to take breaks, but you never listen. This is why we need to play outside more. These too much screen time can hurt your eyesight, slow down your reflexes, and mess with your concentration. Anand, we need to go to the doctor right away. They all rushed to take Aryan to the doctor. हे अर्जुन, गौर से देखो, आधुनिक युग में किस प्रकार आज का युवा कैसे अपने समय को कुछ यंत्रों के माध्यम से व्यर्थ किए जा रहा है। हाँ मधुसूदन, आप सत्य कह रहे हैं। मैं स्वयं यह देख पा रहा हूँ कि किस प्रकार आज का युवा बचपन की सुंदर स्वाभाविकता यंत्रों के मुंह पाश में फंसकर अपने पद से विमुख हो रहा है। हे पार्थ, तुम ठीक कह रहे हो। यंत्रों के माध्यम से युवा न केवल अपनी शिक्षा से भ्रमित है, बल्कि आचरण में भी बुरे भावों से ग्रसित हो रहा है। ये यंत्र ही आज की युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके कारण आज का युवा सही मार्ग का चयन नहीं कर पा रहा है। ये माधव, इस प्रकार तो आज का युवा अपने आने वाले भविष्य को दांव पर लगा रहा है। वह तो इस बात से भी अनजान है कि इन यंत्रों की काली छाया उनके जीवन को सामाजिकता से दूर कर रही है। हे अर्जुन, किस प्रकार इन यंत्रों से ग्रसित होने के कारण ही माता पिता, भाई बहन जैसे सारे सुंदर रिश्ते आज पीछे छूट रहे हैं। हे प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं। इस कलयुग के युवा को इन यंत्रों के कारण मानसिक और शारीरिक क्षति पहुंच रही है। एकाग्रता की कमी हो रही है, तनाव बढ़ रहा है। प्रभु, अब आप ही इन्हें सही मार्ग दिखाएं, यही मेरी आपसे विनती है। तनिक रुको, विचलित ना हो अर्जुन, इस समस्या का समाधान है अर्जुन। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात अर्जुन, जो खाने, सोने, आमोद, प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगा अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है, अर्थात योग विद्या। सत्य वचन प्रभु। तो चलो समाधान की ओर। Scene resumes at the doctor's clinic. Alan is sitting with his closed eyes and his mother looks worried. Aryan, your eyes are strained, but nothing is permanent, luckily. You will need to take a break from screens for a while and rest your eyes. This could have been much worse if you continued like this. I will be more careful from now. I didn't realize how serious it could be. Thank you, doctor. We'll make sure he limits his screen time. Exactly.
Remember, screens are not bad, but moderation is key. Stay active and take care of your health. Excessive screen time can have serious health problems, but with awareness and balanced lifestyle, these issues can be avoided. It encourages children to take breaks, engage in outdoor activities like taekwondo, skating, yoga, etc., and maintain a healthy routine. Thank you. सोच मैंने जो बनाए स्थिर करे वो योग है अधीर मन को ठीक जो फिर करे वो योग है तंदुरुस्त तन को मन को साफ करता योग है आशाओं से जीवन को जो भरे वो योग है योग शक्ति योग भक्ति जो बनाता स्वस्थ है सूर्य सा जो तेज देता सृष्टि करता व्यस्त है मन के अंदर की हर रानी भगाता योग है और भीतर बसे ईश्वर को जगाता योग है योग देता वो दिशा जीवन को जो रोशन करे योग मारे लोग सारे रोज आसन जो करे योग शीतल जल सजो आत्मा पावन करे योग करता काम को काम जो दर्पण करे योग प्रकृति से जुड़ा है योग ईश्वर से जुड़ा योग काव्य योग जिसने पाया पीछे नाम सोच पहले जो बनाए स्थिर करे वो योग है अधीर मन को ठीक जो फिर करे वो योग है तंदुरुस्त तन को मन को साफ करता योग है आशाओं से जीवन को जो भरे वो योग है जो भरे वो योग है जो भरे वो योग है
वहाँ दूसरी ओर क्या हो रहा है? चलो अब उधर देखते हैं।
द्वापर युग की भांति नारी किसी बंधन में नहीं है, वह अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सकती है। आज की नारी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है। अब नारी भी आत्मरक्षा में सशक्त है। आओ बात चले अन्य समस्या की खोज में। ये 2 घंटे का था। Scene opens in grade 3. Three students, Aditi, Sameer and Kiran, are sitting, discussing this activity on different states of India. Dressed in costume representing various states, they are happy and excited about the activity. Sunny enters the class looking shocked. Of course, you always do that. Now you're going to get a zero. You are such a zero, zero, zero. Come on, Sunny. Show us your lunch. We all have bought food from our states. And I have bought litti chokha. And I have bought dhokla. Yummy, yummy, yummy. I have only brought roti and vegetable curry for my lunch. Roti and curry? That's so boring, Sunny. You didn't even try to bring something special. Wow, you really didn't care about this activity at all, did you? First, no costume, and now this. What's next, Sunny? Forgetting a homework too? He's always forgetting something. Maybe he just doesn't care about his school. Right, Aditya? Right. I didn't mean to. Yeah, right. You always mess things up. No wonder nobody wants to be in your group. Ha! See, he's so weak. He can't even stand straight. Hey, stop it! एक और गंभीर समस्या के विषय में बताऊंगा। वो तो बंद कर देते हैं। हे माधव, आप किस प्रकार की समस्या के विषय में बात कर रही हैं? मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया मुझे भी शीघ्र बताइए कि यहाँ ये क्या है? हे कुंती पुत्र, इस समस्या का नाम है मानसिक तनाव, जो किसी अन्य के द्वारा किया जाता है। अर्थात यह एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जिससे बालकों में भय पैदा हो रहा है और आत्मसम्मान की कमी देखने को मिल रही है। हे प्रभु, इस प्रकार की समस्या तो अक्सर बच्चों में देखी जा सकती
बालक के मन में ये भावना प्रवेश कर लेती है। किंतु ऐसा क्यों होता है? कृपया मुझे विस्तार से समझाएं प्रभु। हे अर्जुन, बालकों में यह समस्या आम है, जिसमें वह एक दूसरे को परेशान करते हैं, अपमानित करते हैं, मानसिक रूप से क्षति पहुंचाते हैं, जिसके कारण उनमें ईर्ष्या, सामाजिक दबाव, मानसिक तनाव तथा आत्मविश्वास की कमी होने लगती है। हे मधुसूदन, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, परंतु ऐसी समस्या सामने आती ही क्यों है? हे पार्थ, इस समस्या को अक्सर चुनौतियां ही जन्म देती हैं। जैसे किसी दिए हुए कार्य को यदि भिन्न प्रकार के बालक सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेते हैं और एक बालक पूर्ण नहीं कर पाता, तो वह बालक ही मजाक का कारण बन जाता है, जिससे वह भयभीत हो जाता है और हीन भावना महसूस करने लगता है। ये माधव, अब आप ही इस समस्या का हल बताएं, जिससे बालक के साथ हो रहे इस प्रकार के व्यवहार को रोका जा सके। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात अर्जुन, अत्यंत क्रोध ही सारी समस्याओं का मूल कारण है। यदि हम क्रोध को शांत करने में सफल हो जाएं, तो समस्त समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। देखा था, यदि हम बालक के साथ हो रहे इस प्रकार के व्यवहार को रोकना चाहते हैं, तो किसी अन्य के द्वारा उसकी सहायता करनी होगी, जिसमें उसके सहपाठी, अभिभावक, शिक्षक आदि शामिल हो, ताकि उससे अपनेपन की अनुभूति हो, जिससे उस बालक को किसी गंभीर समस्या का सामना न करना पड़े। हे प्रभु, आपने सत्य कहा, कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं है। ऐसा लगता है कि यहाँ भी समस्या निवारण हेतु गीता का ज्ञान है, हर समस्या का समाधान है। That's not funny anymore. Don't be sad, Sunny. I will share my lunch with you. We can present together on Punjab. I have chole and kulche. Besides, roti is also part of Punjabi cuisine. Teacher starts taking presentations, giving marks and appreciating the students. She observes that Kiran supports Sunny during their presentation. Good morning, ma'am. Good morning. Sit down. Okay, everyone. Are you ready for today's activity? Yes, ma'am. We are excited. Ma'am, I am representing Gujarat. Gujarat's favorite dish is dhokla. Well done, Aditya. Ma'am, I am representing Bihar and its famous dish is litti chokha. Good job, Sunny. Ma'am, we are representing Punjab. Punjab's famous dish is chole kulche. Excellent, Kiran and Sunny. Kiran, I'm so proud of you, my dear, for being such a good friend. Sharing and supporting each other is what makes our class special. But before we move on,
I want to talk about something important. I noticed that some of you were teasing Sunny earlier, and that's not okay. Everyone makes mistakes, but what matters most is how we treat each other. Bullying hurts, and it can make someone feel very alone. We're a team, and we should be lifting each other up, not tearing each other down. Let's remember that kindness is powerful. Kiran showed us what it means to be a true friend today. It's not about being perfect, it's about supporting one another when things don't go as planned. Sorry, Hari. It's okay. Let's be friends. प्रारंभ हुआ है आरंभ हुआ है युद्ध की जिसने खड़ा किया मुझे मेरे अपनों के विरुद्ध मेरे परिवार के विरुद्ध मेरे श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण के मुख से उत्तर आया अभी नहीं है इसमें ये आत्मा मेरी दिल ये क्षण और मेरे दिल सभी क्या सूर्य और क्या ये समय समय चक्र से ही सब चल तेरा श्री बस तेरा काम है बस कर्म पर अधिकार है कर्म नहीं तेरी शान है कर्म तेरी पहचान है बस कर्म चल छोड़ना की मजबूरियाँ खुशियों की मजबूरियाँ जीवन संघर्ष से बचना ही क्या जीवन संघर्ष से बचना ही क्या जीवन संघर्ष से बचना ही क्या
दिया। निर्णय होगा कि कौन पहनेगा मुकुट और कौन झुकाएगा सिर। अब चल पड़ा सात्विक कृष्ण का रथ और बरसेंगे अर्जुन के तीर। चलो पाठ फिर से इस युग की अन्य समस्या देखें। ये संते माधव, मैं आपके साथ हूँ। मैं भी कलयुग की समस्या को जानने के लिए उत्सुक हूँ। Mom, look, I won the first prize in the dance competition. That's nice, Aruhi. But have you finished your homework for today? Not yet, Mom. I have been practicing so much for the dance competition. And what about your maths Olympiad tomorrow? Have you prepared for it? Mom, I don't feel like studying right now. I just want to join proper dance class and become really good at it. I love dancing. Hello everyone. Hello everyone. What's happening here? How was your day, Aruni? Your daughter is refusing to study. She says she wants to become a professional dancer now. What, Arohi? I don't work hard to waste money on your dance. I want you to become a doctor or engineer. But Dad, I love dancing. It makes me happy. I want to be really good at it. No, dancing is just a hobby. You need to focus on your studies. You have to work hard if you want to succeed in life. Your father is right. You need to study and prepare for your future. You have to become a doctor only. Dancing will not take you anywhere. But I don't want to be a doctor. I just want to dance. This discussion is over. From now on, no more dance competitions. Focus on your studies. That's final. Arohi stands silently for a moment, holding a trophy tightly. Tears begin to fall from her eyes. What happened, Didi? Why are you crying? Nothing. I thought you had been proud of me. Inside her room, Arohi sits crying quietly. She clutches the trophy to her chest, feeling heartbroken.
ये माधव एक और समस्या है कि आजकल माता पिता अपने मोह के कारण अपनी संतान का भविष्य निर्धारित करने के लिए उन पर अत्यधिक दबाव क्यों डाल रहे हैं? माता पिता सदा ही अपने संतान के सुख की कामना करते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। इस कारणवश सदा ही अपने संतान की के भविष्य प्रश्न दो, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? प्रश्न 3, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता अर्जुन? We might be pushing her too hard. Arohi has her own dreams, just like we had ours. You are right. I always wanted her to follow my path, but I never asked what she truly wants. I should have listened. Aruhi, we are sorry. We didn't realize how much dancing means to you. I have been thinking, if dancing makes you happy, we won't stop you. But you need to find balance. Studies are important too, to keep your options open for the future. So, I can still dance? Yes, but promise us you will focus on your studies. You can pursue your dream and still keep your future bright. We will support you. I promise I will work hard in both. Thank you for understanding. We are proud of you, not just for winning the trophy, but following your passion. And remember, whatever you choose, we will always be here with you.
Special presentation. We are privileged to take a moment to recognize and honor the remarkable journey of Sri Vijay Singh, a leader whose commitment to public service and political acumen has earned him a great respect across Uttar Pradesh. Sri Vijay Singh currently holds the esteemed position of Minister of State, Government of Uttar Pradesh for the Public Works Department and also serves as the Minister in charge for Gautam Budh Nagar district. He is a proud representative of the Deoband constituency in the 18th Uttar Pradesh Assembly as a dedicated member of the Bharatiya Janata Party. His journey in public service began as a young active member of the Rashtriya Swayam Sevak, and over the years he has played significant roles in the Bharatiya Janata Yuva Morcha, rising to prominent positions due to his leadership and dedication. His hard work and strategic insights contributed to his success in the 2017 general elections, where he scored a decisive victory over the Deoband constituency. Sir, your achievements and commitment to serving the people of Uttar Pradesh are truly inspiring, and we are honored by your presence today. And now it is my pleasure to invite Sri Brijesh Singh to address this gathering and share his thoughts with us. Give him a big round of applause, ladies and gentlemen, and welcome him to the stage. इससे पहले कि मैं अपनी बात को प्रारंभ करूं, इस सभागार के अंदर उपस्थित जितने भी लोग हैं, मैं उन सब से आग्रह करूंगा कि इस विद्यालय के चेयरमैन हमारे बड़े भाई नवीन गोयल जी, इस विद्यालय की वाइस चेयरमैन श्रीमती सीमा गोयल जी और इस विद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर हिमानी त्यागी जी के लिए आप एक बार अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद। मिलेनियम स्कूल के वार्षिकोत्सव में
इस अभिव्यक्ति सभागार में योगेश्वर नंदन कृष्ण के उपदेश और कर्म की अभिव्यक्ति के साथ अर्जुन का उनको पालन करना, ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय तेजपाल सिंह नागर जी, हमारे वेस्टर्न यूपी के यूथ विंग के इंचार्ज मेरे छोटे भाई सुखविंदर सोम जी, इस स्कूल के चेयरमैन भाई नवीन गोयल जी, इस स्कूल की वाइस चेयरमैन सीमा गोयल जी, और यहाँ की जो प्राचार्य हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनके जीवन व्रत को जब यहाँ डिस्प्ले हो रहा था, मैं देख रहा था। जो आईआईटी रुड़की की पास आउट हैं, तो मैंने जब वो मेरे साथ बैठी थी तो मैंने पूछा कि आपका बैच कौन सा है। उन्होंने कहा सर 2000। क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई हरिद्वार में हुई है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का मैं छात्र रहा हूँ, तो मैंने कहा 2000 में आईआईटी डिक्लेयर हुआ था। उससे पहले उसको रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कहा जाता था। और आप सब जानकर के हैरान होंगे, आईआईटी उस समय 4 थी। आईआईटी का कंपटीशन से टफ कंपटीशन रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का होता था, क्योंकि वो अकेला कॉलेज था। तो ऐसे उस कॉलेज की छात्रा रही आपके विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर हिमानी त्यागी जी, यहाँ का पूरा स्टाफ जिसमें सब गुरु बहने हैं, शिक्षिकाएं हैं, शिक्षक वृंद हैं, इस विद्यालय के सभी छात्र और छात्राएं तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं जब से यहां बैठा हूं इस अभिव्यक्ति सभागार में, तो मैंने यहां जो महसूस किया है, यह अभिव्यक्ति है संस्कारों की, यह अभिव्यक्ति हुई है भारतीय संस्कृति की। और जब अभिव्यक्ति संस्कार और संस्कृति की होती है, उस विद्यालय के अंदर पढ़ने वाले छात्र मात्र छात्र और छात्राएं नहीं होती हैं। यदि मैं भारत की पुरातन संस्कृति में जाऊं, भारत के संस्कारों में जाऊं, मेरी नजरों में वो सब साधक और साधिकाएं हैं। मैं उन साधक और साधिकाओं के श्री चरणों में, और उन सब से भी ज्यादा जो उनके अभिभावक यहाँ माता पिता बैठे हैं, उन सब के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी बात को बताऊं। मिलेनियम स्कूल नाम अंग्रेजी का है, पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नवीन भाई को कि आपका नाम अंग्रेजी का मात्र है, लेकिन आपके संस्कार पूर्णतः भारतीय हैं। मैं देख रहा था मंच पर सब कुछ था। मंच पर संस्कार थे, मंच पर संस्कारों की अभिव्यक्ति थी, मंच पर उपदेश थे, मंच पर योगेश्वर नंदन कृष्ण थे। शुरुआत हुई भगवान विष्णु भगवान नारायण की आराधना से। ये किस चीज की अभिव्यक्ति थी? ये अभिव्यक्ति थी क्योंकि जिस मास में हम लोग चल रहे हैं, ये भगवान नारायण का सबसे प्रिय मास है, जिसको कार्तिक कहते हैं। और उसी कार्तिक में आपने प्रारंभ की अपने अभिव्यक्ति में अपने विद्यालय के छात्रों की संस्कृति और संस्कारों को भगवान नारायण की वंदना करके। तो ये आपके माता पिता के दिए हुए संस्कार होंगे नवीन भाई, जिन संस्कारों को लेकर के आप अपने इस विद्यालय के प्रांगण को इतना सुसंस्कारित बनाएंगे। बहुत से विद्यालयों में जाने का मुझे अवसर मिलता है, मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में भी, मेरे अपने जनपद में भी, प्रदेश के अन्य जगहों पर भी। लेकिन मैं बड़े विश्वास के साथ आज ये कह सकता हूं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की वर्तमान कल्चर को देखते हुए, बाहर की कल्चर, इस स्कूल की नहीं, मुझे महसूस हुआ कि शायद आने वाला समय एक दिन आएगा जब लोग कहेंगे
अगर संस्कृति कहीं जिंदा है, संस्कार कहीं जिंदा है, तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जाइए और मिलेनियम स्कूल में वो जिंदा है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक और बालिकाओं ने हमें बहुत सी सीख दी, और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना ये सही है कि मुझे यहाँ नवीन भाई ने चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है, मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है, लेकिन जब भी मैं कभी किसी विद्यालय के कार्यक्रम में जाता हूँ, मैं सच बात आपको बता रहा हूँ, मैं कभी वहां मुख्य अतिथि बनकर के नहीं जाता हूँ। मैं वहां कुछ सीखने जाता हूँ, सीखने इसलिए जाता हूँ कि जो गुरु और गुरुजन आपको पढ़ा रहे हैं वो मुझसे ज्यादा ज्ञानी है, क्योंकि जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उस विद्यालय प्रांगण में जाऊं, मां सरस्वती की आराधना करने वाले शिक्षकों से कुछ सीखूं, और उससे सीख करके जब भी मैं किसी दूसरे विद्यालय में जाऊं तो मैं उदाहरण दूं आपके विद्यालय के कि वहां के शिक्षकों के ये संस्कार थे, आप अपने विद्यालय के अंदर इसको लगिए। और जो देश, जो परिवार अपनी जड़ों को भूल जाता है, अपनी संस्कृति को भूल जाता है, अपने संस्कारों को भूल जाता है, याद रखना मित्रों, वो देश संसार के नक्शे से गायब हो गए। हम यदि आज जिंदा है, आज भारत संसार के नक्शे पर कायम है, ये अलग बात है, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं। भारत में विभिन्न उतार चढ़ाव देखे हैं, आजादी के बाद की बात कर रहा हूं, आजादी से पहले की बात नहीं कर रहा हूं। आजादी के बाद की बात यदि करें, एक अलग कालखंड को भी हमने देखा है, लेकिन हम आज वर्तमान के कालखंड को देख रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों ने यहां पर, अभिषेक भाई बैठे हैं, हिमानी जी ने उनकी जिस चीज पे वो काम कर रहे हैं उसकी चर्चा की, पॉल्यूशन की चर्चा की, छात्र और छात्राओं ने उसका आपको एक झलक दिखाई। लेकिन क्या वर्तमान प्रधानमंत्री से पहले किसी व्यक्ति ने ऐसा सोचा था कि अगर हम एक परिवार एक पेड़ लगाएगा, वो एक पेड़ भी अपनी मां के नाम लगाएगा और उसकी रक्षा करेंगे, तो क्या हम परिवार पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इस चीज को बियॉन्ड द पॉलिटिक्स सोचिए, राजनीति से ऊपर उठ करके सोचिए। उनसे पहले भी कोई प्रधानमंत्री सोच सकता था, लेकिन सोचने का काम नहीं किया। अभिषेक भाई तो मुझसे आयु में छोटे होंगे, बहुत नौजवान है। हिमानी जी ने अपनी मां को खोया, किस कारण? अगर हम एनवायरमेंट को क्लीन रखते, अगर हम लोग अपने एनवायरमेंट की चिंता करते, अरे आज खुशी होती है मुझे, अब तो मेरी बिटिया बीटेक कर रही है, मुझे याद है वो दिन, और मैंने उस दिन के बाद संकल्प लिया था कि मैं कभी पानी को वेस्ट नहीं करूंगा। मैं शेव कर रहा था, एट दैट टाइम आई वाज नॉट एन एमएलए, मैं शेव कर रहा था, मेरी बिटिया आई, उसने टैप को बंद कर दिया, पापा सेव वाटर हमारी मैडम सिखाती है। यानी कि मेरी बिटिया पर सबसे पहला ये प्रभाव किसने डाला? उसकी शिक्षिका ने डाला, उसके गुरु ने डाला। और ऐसा ही एक बहुत बृहद सोच वाला गुरु हमें देश की रक्षा करना और देश को संभालने वाला मिला, जिसको वर्तमान युग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो आज बहुत से लोग, और मैं अभी एक और प्रस्तुतियां चल रही थी, मैं बात कर रहा था हिमानी जी से, प्रेशर बहुत आज के पेरेंट्स के अंदर एक ही प्रेशर है, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने। नहीं, अब संसार और भारत के अंदर इन दोनों स्ट्रीम के अलावा इतने स्कोप है, इतनी विधाएं हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे। थोड़ा सा अटपटा लगेगा। इस समय हिमानी जी ने बायोटेक में एमएससी की होगी, लोगों को लगता होगा बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, लेकिन आज बायोटेक्निकल एक बड़ा फील्ड है। मत प्रेशराइज करिए। मैं एक प्रश्न पूछता हूं आप सबसे, क्या पीटी उषा ने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था क्या? कोई बता सकता है सचिन तेंदुलकर की एजुकेशन क्या है? ओनली 10th स्टैंडर्ड पास। लेकिन सचिन तेंदुलकर क्या है, ये बीटेक वाले से ज्यादा जानते हैं। लेकिन उनकी, सचिन तेंदुलकर की अपनी एक प्रतिभा थी, उनका खेल की प्रतिभा थी, पीटी उषा के अंदर एक प्रतिभा थी, साइना नेहवाल के अंदर एक प्रतिभा थी, सुनीता विलियम्स के अंदर एक प्रतिभा थी।
जरूरी नहीं है कि आपका बेटा एक इंजीनियर बनकर के ही एक अच्छा नागरिक बन सकता है। अरे उसके मस्तिष्क के अंदर जो उसकी अपनी विधा है जीने की, उसको खुल करके जीने दीजिए। मुझे लगता है कि उसकी अपनी विधा, स्वयं उसकी प्रतिभा बाहर आएगी तो वो एक अच्छा इंसान भी बनेगा, एक अच्छा नागरिक भी बनेगा। संस्कार थे इस मंच पर, तो मैंने अंतिम प्रस्तुति देखी, उसके अंदर कथक था। और ये भारत की महान संस्कृति है। आप लोगों को लग रहा होगा कुछ साधक और साधिकाएं आए, उन्होंने कथक किया, सामने बैठी हुई ऑडियंस, माता पिता को लगा होगा हमारी बिटिया बहुत अच्छा नृत्य कर रही है, कुछ लोगों को लगा होगा हमारी बिटिया बहुत अच्छा डांस कर रही है। ये बात सही है। भारत की विधा में, भारत के संस्कारों में, भारत की संस्कृति में कथक एक नृत्य है। लेकिन भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति भारत की सनातन संस्कृति है। और सनातन संस्कृति की पराकाष्ठा देखिए, वो कथक था। और यहाँ मैं संगीत का छात्र तो नहीं रहा हूं, लेकिन यहाँ जो आपके संस्कृत, जो भी आपके संगीत के टीचर होंगे, म्यूजिक के टीचर होंगे, जो डांस की टीचर होंगी, कथक 3 शब्दों पर आधारित है। ता, था और ई। क्या मैं सही हूं? इन्हीं 3 शब्दों पर आधारित है, ता, था और ई। अर्थात ता से तन, था से थल और ई से ईश्वर। तन से थल पर रहते हुए ईश्वर की आराधना का माध्यम है कथक। लेकिन एक फैशन बन गया। एक और प्रेशर है आजकल माता पिता के ऊपर, मेरा बच्चा अंग्रेजी में बात क्यों नहीं करता? मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल सकता हूं। अभी आप लोग सोच रहे हो नेता है, एमएलए है, मिनिस्टर है, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल सकता हूं, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे। मुझे 3 बार भारत का नेतृत्व करने का अवसर विदेश की धरती पर मिला। और जब मैं अमेरिका के दौरे पर गया था, वहां के जो लोग मुझे रिसीव करने आए थे, ये भारत की 2014 के बाद के संस्कारों का परिणाम है। तो जो मुझे डेलीगेट्स वहां रिसीव करने आए थे, उन्होंने मुझे कहा था, नमस्ते भारत। ये हिंदी का प्रभाव है, कोई इसमें बुराई नहीं है। अरे आप अपने बच्चे को इतनी स्वतंत्रता दीजिए, वो जो चाहे बोले। और मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, जिस दिन आपके बच्चे को लगेगा कि मुझे इससे इंग्लिश में बात करनी है, वो अंग्रेजी में भी करेगा। और जिस दिन उसके संघर्ष के दौर का समय होगा, उसको लगेगा कि मुझे सामने वाले से संस्कृत में बात करके अच्छा मैं समझा सकता हूं, तो वो संस्कृत में भी बात करेगा। ये भारत की जर्नी है। वर्तमान युग आधुनिकता का युग है। एक बालक और बालिका मोबाइल का स्ट्रेस बता रहे थे। हम बच्चों को तो सिखा रहे थे कि हम बच्चों को मोबाइल ज्यादा नहीं देखना चाहिए, मोबाइल गेम्स नहीं खेलना चाहिए। लेकिन मेरा तो यहां बैठी मातृ शक्ति से भी आग्रह है, मेरा भी नंबर आग्रह है। आप सब में कोई छोटी बहन होगी, कोई बड़ी बहन होगी, कोई मां समान होगी। आप सबसे भी विनम्र आग्रह है कि जितना समय हम रील देखने में गंवाते हैं, उसका आधा समय अपने बच्चों को लगाते हैं। क्योंकि रील 2 मिनट देखने के बाद आपके मन मस्तिष्क से उड़ जाएगी, लेकिन उस रील को ना देखने से बचा हुआ समय आपके बच्चे के जीवन की आधारशिला बन जाएगी। और मैं सच मानिए, मैंने पहले कहा था, मैं यहाँ शिक्षक या अतिथि बन के नहीं आया हूं, मैं कुछ सीखने आया हूं। और मैं जितना कुछ यहाँ आप सबके सामने बोल रहा हूं, मैं स्वयं एक बेटे का और बेटी का पिता हूं। जो मैंने अब तक के जीवन में अनुभव किया है, मैं वही सब बोल रहा हूं। और एक और आग्रह आप सबसे करके
अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को अंग्रेजी में क्यों बात नहीं करता, आप सबको ध्यान होगा कि लगभग 130 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे। और जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे धर्म संसद में, तो उन्होंने जब बोलना पहली पंक्ति बोली थी तो उससे पूरा विश्व हिल गया था और हिंदी में बोले थे। और चूंकि दूसरे देश में रहता है कि हम हिंदी भाषा को कैसे उनको अपमानित कर सकें, तो वहां एक लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी का टूर कराने के लिए उनको लेके गए। तो उनको तो चूंकि ये था कि हम इनको कैसे, उनकी इतनी पॉपुलैरिटी हो गई थी, उनका इतना ग्राफ अमेरिका के अंदर बढ़ गया था, कैसे इनको डाउन करें। तो जब लाइब्रेरी में उनको टूर करा रहे थे तो ऊपर बहुत अच्छे अच्छे इंग्लिश के राइटर्स की बुक रखी गई टॉप पे, और लास्ट में नीचे हमारे वेद रखे गए, हमारा रामचरितमानस रखा गया, जिस गीता सार पे आज का एक पूरा कार्यक्रम, वहां पर भागवत गीता रखी गई, हमारे पुराण रखे गए, हमारे अनेकों ग्रंथ रखे गए, वो सबसे नीचे रखे गए। ऊपर उन्होंने अपने बड़े बड़े राइटर्स की अंग्रेजी में लिखी हुई किताबें रखी। स्वामी विवेकानंद जी गए और जानबूझ के वहां उनको जो टूर करा रहा था, जो गाइड था उनका, वो बहुत आराम से ब्रीफ कर रहा था। सबसे नीचे जब वो आया तो उसने कहा, हियर आर सम इंडियन बुक्स, आई डोंट नो मोर अबाउट दीज बुक्स। स्वामी विवेकानंद को वो लोग समझ रहे थे सन्यासी है, भगवे वस्त्रों में आया है, इनको हम कुछ भी बता देंगे। स्वामी विवेकानंद, जिसको वो सोच रहे थे इसको अंग्रेजी भी नहीं आती होगी, स्वामी विवेकानंद ने बड़े विश्वास के साथ सीना चौड़ा करके अपने 5-6 ग्रंथों के नाम लिए और बाद में कहा, थैंक्स अमेरिकन्स, फाउंडेशन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये भारत की संस्कृति, ये भारत के संस्कार। जो एनवायरमेंट को लेके यहाँ प्रेजेंटेशन थी, मेरा आप सब से, जितने लोग सामने बैठे हैं और जितनी यहाँ मुझे हिमानी मैम और नवीन भाई ने स्ट्रेंथ बताई, आई थिंक सो 2000 स्टूडेंट्स राइट नाउ, 1200 1200 हैं, तो 1200 का मतलब हो गया लगभग 1200 परिवार आपसे जुड़े हैं। और टोटल जितनी यहाँ गुरु बहने हैं, गुरु माए हैं, पूरा आपका स्टाफ सब लगा के लगभग 1500 परिवारों में हम संपर्क करते होंगे। मेरा आप सबसे आग्रह है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर एक मुहिम चलाई है अपने देश के पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, एक पेड़ माँ के नाम। तो मैं आग्रह करता हूं, जिस दिन इस सभागार के अंदर बैठे हुए जिस व्यक्ति की माँ का जन्मदिन आए, उस दिन वो कुछ करे ना करे, एक पेड़ अपनी माँ के नाम जरूर लगाए। और आप सब से जो इस स्कूल के, इस विद्यालय के छात्र हैं, छात्राएं हैं, मुझे लगता है जितने बच्चे यहाँ परफॉर्मेंस दे रहे थे वो सब 3rd स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड के बच्चे थे, लेकिन ये स्कूल 12th स्टैंडर्ड तक का है। मैं आप सब से बच्चों एक ही आग्रह करता हूँ, इस जीवन में हर माता पिता एक सपने के साथ अपने बालक का प्रवेश एक विद्यालय के अंदर कराता है और उसके साथ उसकी उम्मीदें जुड़ी हुई होती हैं, उसके सपने जुड़े हुए होते हैं। उनके सपनों पर आप, उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प रखिए, उनकी उम्मीदों को पूरा करने का संकल्प रखिए। लेकिन मैं इन सब से हटके एक बात कहता हूं, कई बार व्यक्ति को जीवन में असफलता मिलती है, लेकिन कोई भी असफलता अगली सफलता का द्वार खोलती है। आप जीवन में सफल हो, आप अपने अपने जीवन में जो मुकाम आपने तय किए हो, जो आपने अपना गोल सेट किया हो, उस गोल को प्राप्त करिए। आपके जीवन में हर क्षण प्रभु खुशियां लेके आए, आपके परिवार में खुशियां लेके आए, इस पूरे विद्यालय परिवार में खुशियां लेकर के आए। लेकिन मैं अंत में केवल एक ही बात कहकर के आप सबसे अपनी विदा यहां से लूंगा कि जीवन में सब कुछ छोड़ देना, जब भी कोई कष्ट का समय आए सब कुछ भूल जाना, लेकिन इस जीवन में कभी अपने माता पिता और गुरु के कर्ज को मत भूलना। इस दुनिया में 3 लोन हैं, आप हाउसिंग लोन लेंगे, आगे जाकर के उतार देंगे, आप बिजनेस लोन लेंगे, आप उतार देंगे। मुझे बताया
नवीन भाई ने कि सीमा जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लोन चाहिएगा तो वो हेल्प भी कर देंगे। उनके द्वारा दिलाए गए समस्त ऋण, समस्त लोन आप उतार देंगे, लेकिन इस दुनिया में, जीवन में कभी भी आदमी माता पिता और गुरु का ऋण नहीं उतार सकता। तो जहां मेरे जीवन में जिस ऊंचाई पर आप पहुंच जाएं, जहां आपको अपना, आप हैरान हो जाएंगे। मैं मंत्री बनकर के लौटा था 2017 में, पहली बार विधायक बना। 2022 में दोबारा विधायक बनने के बाद मैं मंत्री बना। मैं मंत्री बनने के बाद जब मैं अपने क्षेत्र में जा रहा था, बड़ा लंबा चौड़ा स्वागत जुलूस सब चलता है, आप सब जानते हैं, राजनीति का पार्ट है। और जब मैं अपने जहां कार्यक्रम था, जब मैं वहां अपने मंच पर पहुंच गया, अचानक मेरे सामने, मेरे 8वीं कक्षा में मुझे जिन्होंने पढ़ाया था मैथ, मेरे विधानसभा क्षेत्र की यशपाल त्यागी गुरु जी थे। अचानक मेरी दृष्टि पड़ गई, मैं मंच से उठा, मैंने जाकर के सबसे पहले उनके चरण छुए, क्योंकि अगर वो आशीर्वाद मेरे साथ है तो दुनिया का हर आशीर्वाद मेरे साथ। एक बार फिर से नवीन भाई के इस सार्थक प्रयास को, और सबसे ज्यादा इस सार्थक प्रयास को, मैं बहुत से स्कूल्स में गया हूं, हो सकता है यहां भी आगे कोई वेस्टर्न परफॉर्मेंस होगी, मैं उसको बुरा भी नहीं मानता हूं, आजकल के बच्चों की टेस्ट हो सकता है, लेकिन आपके इस परिसर में आकर के मुझे एक सात्विक ऊर्जा का एहसास हुआ है, एक सार्थक और सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ है। और मुझे लगता है उस एहसास के पीछे यदि कोई सबसे बड़ी शक्ति है तो आपके इस प्रांगण में जिन संस्कार और संस्कृति को आपने जिंदा रखा है, उन सबकी सार्थकता और सकारात्मकता की अभिव्यक्ति है, और यही इस अभिव्यक्ति के स्वागार का आज का सार्थक परिणाम। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। मैं थोड़ी सी अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूँ, कई नेताओं को आजकल अनपढ़ मान लेते हैं, थोड़ा बहुत ठीक ठाक बोल रहा हूँ ना। तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जितने हमारे साधक और साधिकाएं अगली परफॉर्मेंस के लिए रेडी बैठे हैं, इन सब बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जितने इस विद्यालय प्रांगण में पढ़ने वाले हमारे छात्र और छात्राएं हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वो अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, और उन सब के अभिभावकों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब ने अपने आने वाले जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छे विद्यालय का चयन किया है, और मेरे सामने बैठा हुआ जो भारत है बच्चों के रूप में, वो आने वाले कल का भारत है। और यहाँ आकर मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में कहा था, द फाउंडेशन आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं भी यहाँ कह सकता हूँ कि यहाँ जन्म लेने वाली फाउंडेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ब्रजेश सिंह सर, आपने इतने कम समय में इतना कुछ हमें सिखा दिया और बता दिया कि हमें लगता है यहाँ पर आज जो हम आपके साथ हैं वो हमारे को बहुत ही अच्छा ज्ञान मिला है। थैंक यू सो मच। आई वुड नाउ रिक्वेस्ट आवर चेयरमैन मिस्टर नवीन गोयल सर and our principal Dr. Himani Tyagi ma'am to kindly come up on the stage. We are going to felicitate our founder staff members who have been with our school right from its inception. तो इसीलिए मैंने श्री ब्रजेश सिंह सर से थोड़ी रिक्वेस्ट करी है कि 5 मिनट और हम इनको रोकेंगे। First we recognize Mr. Brajesh for our longest serving member who has been a vital part of TMS family since 2018. Next we have Monica Chaudhary ma'am who joined us in March 2019. Please give them a big round of applause. Next we have Ms. Jishijit Kaur, who has also been a valued member of the TMS family since March 2019. So Monica Chaudhary ma'am and Jishijit ma'am have joined at the same time.
We also honor Ms. Afsana, who's been with us since July 2019. We will request them all to gather for a group photograph. Thank you so much, sir. Thank you so much, Shri Vijay Singh, sir. Naveen Goel, sir, and Himani Tyagi, ma'am. Thank you so much. Over to our young hosts. अति उत्तम प्रभु, मुझे लगा इस कलयुग में केवल समस्याएं हैं, समाधान नहीं। परंतु ऐसा नहीं है। आपका दिया गया ज्ञान आज भी जीवित है, जो मनुष्य को जीना सिखा रहा है। अभी रुको, उधर देखो, उधर क्या हो रहा है। जो आज्ञा प्रभु। Scene opens with Arav sitting in class, looking nervous and down. His classmate Ananya approaches him. Arav, in yesterday's quiz, why didn't you raise your hand in the class? You knew the answer. I don't know. What if I was wrong? Everyone would laugh at me. Laugh at you? Come on, you're not performing a comedy show. You knew the answer, so just say it. Arav looks down, still unsure. At that moment, teacher Muller enters into the class and overhears the conversation. Arav, if keeping answers to yourself was an Olympic sport, you would win the gold medal. Why didn't you speak up? But I am not good at anything. What if I make a mistake and everyone laughs? Well, if people laugh at you for making a mistake, then they are giving you free entertainment. But seriously, that's how you learn and grow. Don't let the fear of a mistake stop you from showing what you know. Arav, do you remember when you tried to build that robot in grade 4 and it ended up looking more like a toaster with legs? Hey, it wasn't that bad. Ha ha ha! No, it wasn't bad at all. And do you remember we all cheered for you because you didn't give up? You have always been full of curiosity and ideas. So what if it looked like a toaster?
You still tried, and that's what matters. Yeah, I guess. But what if I fail? I look at people like Jack and Ananya. They are always so confident, always doing well. Me, I just feel like I am always behind. आपका तुम्हें आत्मपरिचय के बारे में बताऊंगा क्योंकि आज के समय में बच्चों का आत्मविश्वास निरंतर कम होता जा रहा है जब तक आत्म यानी स्वयं का परिचय नहीं होगा तब तक उनके Behind Arab, you are not behind anyone. Everyone moves at their own pace. You have the strength too. You are curious, always figuring out new things, even when others don't notice. Exactly. Our confidence comes from trying, from taking that leap and learning as you go. You have so much potential. You just need to trust yourself. You wanted to build robots, so start with small steps. And you don't have to do it alone. We are all here to help you along the way. And if you invent a flying toaster, I'll be the first to buy one. My friend Arab, many great inventors failed countless times before they succeeded. Take Thomas Edison for example. He failed over of thousands of times before he invented the first light bulb and the Wright brothers. They had countless crashes before they invented the first airplane which actually flies. Okay, I will give it a try. Maybe my flying toaster will be the next big thing. That's the spirit. Remember, Arav, it's not about being the best right away. It's about dreaming big and giving it your best shot. And parents too need to support their children dream, even the one that seems impossible at first. Little belief goes a long way. Yeah, with the support of teachers and parents, every child can find the confidence to dream big and succeed. Thank you. Just a small announcement. I request all the parents who are going to the classrooms to pick up their child, please refrain, have patience. We know we are running a little late, but these children have really practiced for weeks to put up this show. So request you all to please stay back in the auditorium and not leave the auditorium to get your children, because we have a process. We have to make sure that the children are secure. They are secure with us. So just have a little more patience. Thank you.
राइट साइड में लंबी रखिए और लेफ्ट आगे रखिए
तस्मात्त्वमुद्दिष्ट यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् नैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। देखा बात, हमें कठिन परिस्थितियों रूपी युद्ध से लड़कर उन पर आत्मविश्वास के साथ जीत हासिल करनी चाहिए। आत्मविश्वास का मूल रूप ही आत्म यानी स्वयं है। जब हम स्वयं पर विश्वास करते हैं और केवल दूसरों से प्रभावित होकर अपना निर्णय लेते हैं, किंतु जब वे स्वयं को जान लेते हैं और यह समझ लेते हैं कि ये संघर्ष ही उन्हें शक्तिशाली बनाते हैं, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उनका उत्साह बढ़ने लगता है। आत्मविश्वास कुछ भी नहीं, केवल मन की स्थिति है पार्थ, जो केवल हमारे नियंत्रण में ही है। प्रभु, कलयुग के विषय में संशय दूर हो गए। गीता का ज्ञान हर युग में जीवित है। आप हर युग में हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आज भी और कल भी रहूंगा। अध्यापक एवं प्रिय अभिभावक, मेरा यह प्रश्न आप सभी से है कि क्या हमें इन मासूम बच्चों पर अपना दबाव बनाना चाहिए? क्या सदैव परिस्थितियां अनुकूल ही रहती हैं? क्या आपको नहीं लगता कि कभी कभी आप इनके पथ की बाधा भी बन जाते हैं? आपको समझना होगा कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। परिस्थितियां सदैव अनुकूल नहीं होंगी। पग पग पर असफलताएं भी मिलेंगी, जिन पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं है। आपको एक माली की भांति इनका पालन पोषण करना है। जिस प्रकार एक माली एक पौधे को उचित खाद पानी देकर बड़ा करता है, उसे खींचकर नहीं। ये आपको समझना होगा कि असफलताओं से ही मनुष्य धीरे धीरे सीखता है। आप सभी को ये स्वीकार करना होगा कि प्रत्येक छात्र में अपनी अलग अलग क्षमताएं होती हैं। बस आवश्यकता है इन क्षमताओं के उचित विकास करने की। तो आप सभी इस पर विचार कीजिए। Wow! Your performances beautifully embodied the teachings of the Bhagavad Gita. You focus on your efforts rather than the results. Each act showcased their dedication and passion, serving as an inspiration to all your fellow students. A huge round of applause. Next, we explore age-old practices of Havan, fasting,
rising early, yoga, sacred traditions deeply rooted in our culture. These timeless rituals not only connect us to our heritage but also offer profound benefits in modern living, nurturing both physical and mental well being. Let's discover their enduring relevance in today's world. Now, I would like to invite grade 5 students for PowerPoint presentation. Dear parents, we would request and urge to please have patience. These children have really practiced and rehearsed for months for this show. I'm sure you can spare 1 hour extra for this special day. We understand that the program started late because of an unexpected delay on the part of the chief guest. But we have another guest of honor also waiting here. And what impression will our guests take from here? So please, we request you to have patience for just a little while longer. Thank you so much. Good morning, everyone. I hope you're feeling really awesome today. My name is Atharv Chandra, and my teammates are Riti, Kushagra, Amri, and Yansh. We are here to explore the science behind ancient Indian traditions and how they can help us. We are going to look at some old ideas from Indian culture that can make our lives better and have interesting science behind them. As we go through this presentation, think about how we can use these old practices in our everyday lives. In this presentation, we will explore important Indian traditions and look at practices that have been around for a long time. We will talk about things like waking up early, worshipping the sun, yoga, havan, a special fire ceremony, fasting, lessons from Bhagavad Gita, and community activities. We will find out why these traditions are helpful and how they can make us feel good and healthy today. Our goal is to connect the rich history of Indian culture with what we know in modern science, showing how these practices are still important. By understanding these connections, we can use this knowledge to make our daily lives even better. Importance of waking up early. Let's start with the tradition of waking up early. In Indian culture, getting up during the Brahma Muhurat or the time before dawn is very important. People believe this time is good for meditation and thinking about themselves. Science shows that waking up early helps our bodies feel better and can make us more productive and focused during the day. For example, studies have found that students who wake up early often do better in school as they have more time to study without distractions. In the research paper published by Cartwright in 2004, study was conducted on how sleep plays a crucial role in memory reactivation and consolidation, helping to change and strengthen our minds. Worshipping the sun. Next, let's talk about the importance of sunlight, especially in rituals like Surya Namaskar or the sun salutation. This practice shows how important sun worship is, and it has scientific benefits too. Sunlight is our main source of vitamin D, which is really important for strong bones and a healthy immune system. Also, getting sunlight helps increase serotonin levels, which can make us feel happier and reduce feeling of sadness. For example, many people living in cities don't get enough sunlight, leading to vitamin D deficiency.
By practicing Surya Namaskar regularly, we can stay fit and get enough sunlight, which helps our mental health too. Remember, it's important to do this early morning, as the early morning sun provides us vitamin D, while the afternoon sunlight provides us harmful UV rays. The research paper published by MTPI in 2020 examines the role of vitamin D in athletes, highlighting its importance for performance and exploring new trends in this application. Now, let's discuss yoga, which is an important part of the Indian tradition. It includes physical postures, breathing exercises, and meditation. Many scientific studies have shown that yoga is really beneficial for our bodies and minds. It helps improve flexibility, strength, and mental health. For example, research has found that practicing yoga regularly can lower stress and anxiety while boosting brain function and overall health. A study published in the Journal of Clinical Psychiatry that people who practiced yoga had lower anxiety and depression symptoms compared to those who didn't do any physical activity. This shows that yoga is a powerful tool for staying both physically and mentally healthy. Moreover, yoga is recognized internationally and is promoted by Indian government with International Yoga Day celebrated on 21st June each year. At TMS, we offer yoga classes which benefits all students. A study conducted by Curious Curious in 2023 explores the explores the explores the benefits explores the benefits of yoga and meditation on children with ADHD. Fasting and its health benefits. Fasting is another tradition that has important health benefits, especially during religious events like Ekadashi and Navratri. Intermittent fasting is popular today because it helps with weight control and makes our body healthier. It also helps repair our cells, which can help us live longer. For example, studies have shown that intermittent fasting can help people lose weight and improve their blood sugar and cholesterol levels. Many people also notice that they can think more clearly and stay focused better when they fast. Interestingly, this practice aligns with Western dietary trends today, yet it has been highlighted in Bhagavad Gita for ages, showcasing its timeless relevance. The study conducted the study conducted by University of Glasgow in 2018 examines intermittent fasting as a treatment for overweight and obesity in adults, while analyzing its effectiveness in weight management. Teachings from the Bhagavad Gita. Now, let's look at the teachings from the Bhagavad Gita, which teaches about doing our duty, being ethical, and having self-control. These ideas are very important for our mental health today. The Gita talks about resilience and mindfulness, which means being aware and focused on what's happening right now. This helps reduce stress. The Bhagavad Gita also talks about karma, which happens because of our action, dharma, our purpose in life, and seva, giving us a reason to feel good about ourselves.
People who have a purpose tend to be happier and feel less stressed. Karma, a call for climate protection by learners, is an initiative generating awareness about environment conservation through our thoughts and actions. It encourages everyone to take action to conserve the nature and make the planet healthier. Dharma, standing up for the good, is all about doing what's right and fair. It encourages kindness, honesty, and courage to make the world a better place. Seva, dry ration donation by TMS family, unites the TMS community to donate dry food items, offering help to those in need. Spreading the wisdom of Gita, community outreach initiatives by TMS. Our journey to care for the planet through Karma. TMS Special Community Program follows the teachings of the Gita, showing kindness, dedication, and helping others without accepting anything in return. The donation of books, dry ration, toys, and clothes done by TMS students and parents show us the true meaning of dana, charity, and seva, selfless service, as taught in the Bhagavad Gita. These generous acts are done with pure heart and are helping to make a real difference. In partnerships with groups like Charter for Compassion, Bhumi, Goonj, Robin Hood Army, and Youth Collaboration for Compassion. Role of community practices. Community practices in Indian traditions, especially during festivals, show us how important it is to connect with others. These gatherings help us feel we belong and give us support. Research has found that having strong friendships and family ties can lower stress and make us happier. For example, people who have good friends and family often have better health and feel less anxious. Community support is important for our mental health and deals with life challenges. Celebrations like Diwali and Holi not only bring us together but also provides an emotional support and creates a strong sense of community. At TMS, our community practices embody the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, a concept introduced by our leaders emphasizing that the world is one family. In conclusion, Indian traditions offer great practices that can help us feel better. The interesting science behind them shows how useful they are. By doing things like waking up early, worshipping the sun, practicing yoga, fasting, and joining community gatherings, we can be healthier, think more clearly, and feel stronger emotionally. I encourage all of you to try these practices and include them in your daily lives for better health and happiness. Thank you. अब शायद दांडक कर लेंगे ना। That was truly enlightening. It's remarkable to see how practices like Havan, fasting, rising early, and yoga continue to offer immense value in today's world, reminding us that the roots of our culture hold timeless relevance. Let us warmly welcome. As we approach the festival of lights, Diwali, let's remember to celebrate it in a way that brings joy without harming our ये environment चार डिवाइस and हमारे ही है health. ना।
Crackers cause air pollution, You can't see. harm animals, and affect our lungs. Click. Today, we are taking a pledge for a cleaner, safer, and a happier कौन हो Diwali. गए? I would like to invite Shaurya Mani to party for the pledge. संगी चले गए? I would like to request everyone to please stand up and raise their right hand up and repeat after me for the pledge. बंद कर दो। This winter, This winter, I pledge to make I pledge to make sustainable choices sustainable choices for a brighter future. for a brighter future. I will prioritize I will prioritize sustainability sustainability by using by using clay diyas radias and natural decorations and natural decorations to celebrate Diwali, to celebrate Diwali, keeping our festivities keeping our festivities beautiful beautiful and eco-friendly. and eco-friendly. I will avoid I will avoid bursting firecrackers, bursting firecrackers ensuring and sharing a noiseless celebration a noiseless celebration that protects the environment, that protects the environment, reduces air pollution, reduces air pollution, prevent distress to animals and birds, and distress to animals and birds, and keeping our loved ones and keeping our loved ones safe from respiratory issues. I will focus on I will focus on family togetherness family togetherness by carpooling by carpooling to gatherings, reducing our carbon footprint reducing our carbon footprints while sharing while sharing the joy of the festival. the joy of the festival. I will teach our children I will teach our children the importance of a green Diwali the importance of a green Diwali by planting a tree by planting a tree and choosing eco-friendly gifts and choosing eco-friendly gifts like like plants plants and handmade items, and handmade items, ensuring ensuring that we all contribute that we all contribute to a healthier planet. to a healthier planet. Thank you. Thank you. और उन बच्चों ने दवा तो भाई वो यहाँ कौन सा बात Let us warmly welcome our esteemed chief guest, Mr. Abhishek Kumar Sir, on the stage. He is the co-founder and CEO of Lung Care Foundation, a non-profit focused on care and cure of 2.6 billion lungs in India. Under his leadership, the foundation has impacted over 150,000 individuals and reached over 100 million through digital campaigns and set a Guinness World Record. The organization work has been recognized by the President and Prime Minister of India and presented at the UN. He holds degrees from VIT University, Saar and University of Oxford. Good afternoon, everyone. Shri Naveen Goyal sir, Shri Seema Goyal ma'am,
and Shri Dr. Himani Tyagi ma'am, thank you so much for having me part of this prestigious program. Very good afternoon to all the parents and the actual chief guest of this program, the amazing children who have done such a phenomenal work. In my bio now, I need to add one more school, which is the Millennium School, because I've learned so much. So I will have to say I'm an alumni of the Millennium School. Apart from learning, one more thing I'll say is that I'm inspired by the children. I was sitting there and thinking, how will I address so many parents? But then I saw the children and I was like, wow, they're doing such a great job. So a huge round of clap for the work that the children have done. Can we have the presentation, please? I'm from Lung Care Foundation. Lung Care Foundation is a not-for-profit organization working towards care and cure of 2.8 billion lungs in India. When we started, we used to say 2.6. Right now, it's 2.8. We have 1.8 billion people in India. Everyone has two lungs, so it's a huge task. We work towards awareness, research, and clinical care. And these are some of the founder trustees, Dr. Arvind Kumar, who is a chest surgeon at Vedanta. Earlier, he was professor of surgery at AIMS. Mr. Rajiv Khurana. Can we go back, please? I'll just say next slide. If you can go back. Yes. Yeah, thank you. These are some of the glimpses of the journey. The students already shared the work that we have done. And this is the world record that we created with 5,003 amazing school children. They formed the human image of a lung, highlighted what the health impacts of air pollution are, and asked everyone to take a pledge to act towards clean air. And this is when Shri Narendra Modi ji himself sent a personal message congratulating the efforts of the student. So now starting my core presentation. I would love someone to volunteer. Would someone like to volunteer to answer this? Any volunteer? Anyone who would like to answer this? Anyone? Would any student like to answer this question? How many times do we eat, drink, and breathe? Is there anyone who knows the answer? I see some hands at the end. I think that student. Can we please give the mic to him? How many times we breathe? How many times we drink? How many times do we, can we go to the next slide? How many times do we eat, drink, and breathe? We eat 3 times breakfast, lunch, and dinner, and we drink I think six times, and we breathe all time. That's phenomenal. But do you have a number? Can you take a guess? 2,000, 5,000, 50,000, 3,000? Ma'am, I think 60,000, 60 lakhs. No. Well, you gave a lot of right answers. If we go to the next slide, thank you so much. If we go to the next slide, we eat about 3 to 4 times a day. We drink 6 to 8 times a day. But we breathe 20,000 times a day. My next question, if we go on to the next slide, is how many times do we think about eating, drinking, and breathing? Can I have another volunteer? Any one parent, please? Any one parent? Any parent who would like to answer this? I see some, yeah, we have a volunteer here. Hi, sir. So one question, how many times in the last 1 month maybe have you used Swiggy or Zomato? I usually avoid sweetie, but it's like once or twice in a month. Not more than that. Alright. And if you're going out, how many times have you thought of keeping a water bottle with you? Every time. Every time.
How many times have you checked about the air quality outside? At least once a day. You do once in a day. You're an exception. That's a phenomenal work that you're doing. Most people do not see the air quality. We take breathing for granted. We don't think about what we are breathing. Thank you so much. Thank you. So we breathe 20,000 times a day and we are breathing poisonous air. But we don't think about it. If the water is dirty, we will never drink it. If the food is dirty, we say, sorry, I myself am impacted by air pollution. If the food is dirty, we tell our children to not eat it. So why are we accepting bad air? If we go to the next slide. Have you ever wondered what your lungs look like? We can see how we look from our face, but has anyone ever wondered what our lungs look like? Today I can give you a glimpse of that. If you go on the next slide, we'll get a sneak peek because of our founder trustee, Dr. Arvind. He operates on 1,000 lungs every year. Every year. And he gets to see what the lungs look like. So let's go to the next slide now. This is what a healthy pink lung looks like. It's supposed to be pink, it's supposed to be clean. In the middle is what you see the image of a 40-year-old non-smoker. A 40-year-old non-smoker's lung has deposits as if it's a smoker's lung. And what's even scary is what on your extreme left is the photo of a 14-year-old boy's lung. And this boy comes from a polluted city, comes from a non-smoking family, and still there are toxins deposited on their lungs. This is the reality of the air that we are breathing, our children are breathing, and every day 20,000 times it's going into our body. Going on to the next slide. If you think that this is not true, we thought let's do an experiment. We put a replica of a lung outside. This is made of HEPA filters, the same thing that is there in air purifiers. And we left it outside thinking it will probably stay white for some time. But within few days, it turned black. Any guess on how many days it took to go black? You can just shout the answer. 3 days. 6 days. That's exactly the answer. It took 6 days for it to turn black. We will clap for him, but not for this fact. That in 6 days, if you go to the next slide, in 6 days, a white replica of lung became completely black. So how bad is the air that we are breathing? Next slide, please. The previous slide. So in terms of health damage, a study done by University of Berkeley says 22 microgram per meter cube of PM 2.5 is equivalent to the same harm that smoking one cigarette does. Now what does that mean for us? If you go on the next slide. The annual average PM 2.5, and this is the annual average. I'm not talking about peak Diwali season right now, where if you check it will be 300, 400. Throughout the year, the annual average was 100 micrograms per meter cube. 22 micrograms per meter cube is one cigarette. 100 by 22 is 4.59 cigarettes a day. Now, multiply by 365. It's 1,675 cigarettes per year. It's a scary fact. And this is the reason why we are having a growing incidence of lung cancer and other respiratory diseases in non-smokers. Every one of us is smoking 1,675 cigarettes per year without even touching one. So those who are smoking way more. Can we go to the next slide? The sad part is that newborns are also breathing the same air. Newborns are breathing this air. The second some child gets born, comes out in the air, they are exposed to the bad air with their tiny little respiratory tract, lungs,
and they get exposed to this kind of air. Imagine the kind of damage this air is doing to them. Would you ever keep a newborn in a room where about 10 to 20 cigarettes are smoked every day? No. But we are keeping our children in an environment where about 1,000, 1,500 cigarettes are there every year. Going on to the next slide. Is it only a Delhi problem? A lot of people say that it's a Delhi problem. If you go to the next slide, air pollution is sorry, air pollution. Air pollution is currently a problem across India. Most big cities in India have extremely polluted air. Delhi, of course, is leading the charts, but then if you see other cities, Kolkata, Mumbai, Hyderabad, all are polluted. Going on to the next slide. Many of you might think, well, Greater Noida is beautiful, there's not many industries, there's so much greenery, but unfortunately, air has no boundaries. The air we share is the same air that everyone breathes. And you can see the statistics here that purple, if it is purple, purple means that the air is about 10 times worse than the recommended standards by World Health Organization. Let's go on the next slide. And it's not just outdoors, it's indoors also. The same air that's outdoors comes indoors. And not just that, indoors we have way more pollutants because unknowingly we are lighting up agarbattis, we are lighting up incense sticks, we are lighting up candles which have good fragrance, we are putting odomos to protect our children, but we don't realize that all of these items have particulate matter inside them that has harmful impact on our children. So while we are trying to ensure, let our child be in a nice smelling environment, let them be in a nice mosquito-free environment, we are actually giving them bad air to breathe. Going on to the next slide. Does it impact only lungs? Many people think that air pollution impacts only lungs. Because we breathe bad air, it goes to our respiratory tract, we cough, and that's what happens. Let's go to the next slide. Here you can see what is there in air pollution. There are three main things. There are particulate matter. You often hear PM 2.5, PM 10, PM 1. If you see this image, there's a human air. A small section of the human air is that grey part that you can see, and in that red dot is how big a PM10 particle is. And within that red dot, those white dots is how big a PM2.5 particle is. And apart from that, there are gases and heavy metals. Now, why I am showing this is one, you should know what is there in the air you breathe. Two, these particles are so small that they go inside your lungs. From the lungs, they go inside your bloodstream, and from your bloodstream, they go to the complete body. There's not an organ that is not impacted. Going on to the next slide. Our lungs are the gateway to our body, and what we breathe impacts every organ in the body. Next slide, please. The previous slide. So here, if we see air pollution starts impacting children or newborns even before they are born. There are enough research studies that show that living in polluted air leads to preterm birth, low birth weight. Once children are born, they have asthma, they have slower development of lung, they have development problem, ADHD. A lot of students right now have ADHD. Research has shown that children growing up in polluted air have more chances of developing ADHD, wheezing. As we become adults, we have asthma, diabetes. Diabetes and obesity has been linked with air pollution, stroke, heart attack, chronic obstructive pulmonary disorder. And as we become elderly, more these diseases, these conditions become more fatal, where it could be lung cancer, it could be dementia, it could be stroke, it could be heart attack. So air pollution is not just impacting your lungs where, okay, I'm थोड़ी खांसी हो रही है क्योंकि अभी बुरा pollution है. It's quietly impacting each and every organ of your body. Next slide, please. And in terms of numbers, 2 million people die annually because of air pollution. These are numbers published by reputed research groups.
What that means is around 5,000 deaths per day happen in India due to air pollution. And 7.9 years is the number which is supposed to be the number that in case Delhi had good air, which is air as good as WHO recommends, each of us could live 7.9 years longer than what we would live currently. Next slide, please. So what do? Do we stop breathing? If we try that, probably some of us could do that for 30 seconds, 40 seconds, 50 seconds. At most, the children who are really active here can do it for 2 minutes, but not more than that. So we need to do something apart from stopping to breathe. We need to clean the air. Going on to the next slide. Now, many people will say cleaning the air is not under our responsibility. We can't do anything. The government is responsible. How can we clean the air? Well, the power of one is extremely powerful. Each one of us can drive significant amount of change in our own personal life, in the life of other people. Today is a prime example where this school, by imbibing this particular program on Gita, has empowered so many families with these powerful knowledge. So same way, if you are empowered with knowledge on air pollution and decide that I want to clean the air, you can impact a large number of families. So let's actually see what you can do. Going on to the next slide, please. We will say there are 4 key things that you can do: learn, protect, reduce, and mobilize. Now I'll cover each one of them quickly. Next slide. First, we need to learn. Can we go back, please? We need to learn what is air pollution, what is AQI, what are the health impacts, and who are the agencies responsible for it. Because till the time we don't learn, we can't do anything. If these children had not learned about the teachings of Bhagavad Gita or their skills of dance, taekwondo, they wouldn't have been able to perform the way they did today. So one, we need to learn about air pollution and its health impact. Next, we need to protect our